Hi everyone. This is the latest Abhyaas session being conducted by me. Now, what exactly we do in the Abhyaas session? एक बार आप सुन लीजिए. We take the newspaper articles. Now, suppose everyone knows how to make notes from the newspaper for mains examination, right? But here we exactly are teaching how to learn prelims from the newspaper, right? So हमने एक prelims का article लिया, उस article से हम क्या क्वेश्चंस प्रीलिम्स के बना सकते हैं, दैट वी आर गोइंग टू आस्क यू इन द अभ्यास. और सिलेबस क्या है? सपोज टुडे आई एम टेकिंग ऑन अभ्यास सेशन, द सिलेबस इज लास्ट वीक न्यूज़पेपर, है ना. तो आपका रिकॉलिंग भी हो रहा है उससे. इट्स लाइक द वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट यू इट्स हेल्पिंग यू इज द रिकॉलिंग. आप रिकॉल कर पा रहे हो. सेकेंड इज द फिलिंग द गैप बिकॉज वी आर टेकिंग द 5 न्यूज़पेपर, राइट. द थर्ड पार्ट इज what you are learning is the organic current affairs. यहीं से questions exam में आते हैं. Now the very first question if you see here we asked today is the National Security Guard NSG formally came into existence by which act. Now इतना आपको दे के पूछा जाता है. We don't give you 4 options A B C D. No, you just have to write the exact year. आप लिखोगे तो भी ठीक है और act लिखो तो भी. Now this is what is the right answer. Now you see here what exactly this act do. The act provide for the Constitution and the regulation of an armed forces of the unit combating terrorist activities. This is the major purpose of ये याद रखना बहुत ज़रूरी है because अभी आपको लग रहा है कि it's easy but when you will be given 4 options what is the major function of the NSG तब आपको समझ में नहीं आएगा. You will get confused. Okay, now I am expecting in UPSC Prelims this question and next year you can expect this 3 column question. Okay, in which we have different agencies 1 2 3, then we have formed by which act, and third is a motto, right. Now they will give BSF आपको मिलेगा, फिर आपको NSG मिलेगा, CAP. So they will give you different armed forces and then motto of these armed forces, है ना. because India's के respect में you should know a term. वो क्या है, इंडिया मिट्टी को जानना है अब. That's what they are focusing on. You should know more about India, right. The motto of NSA is सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा. This is what you have to learn. Now suppose for example BSF का ड्यूटी unto death, right. Now operational headquarter का NSA का it's a Manesar, Haryana. This is a nobody will expect this. Now the next question I asked you is NSC operates under the administrative control of which ministry? We have Ministry of Home Affairs is the right answer. Now the next group is the SPG, Special Protection Group. Okay, now if you see here every member of the group shall when it was formed. This is another very important question. अब आपको मैं दिखाता हूँ what exactly is the difference. Now you see when it was formed 1988. Now when I ask you this what was the special purpose of this group, क्या स्पेशल क्या था इस ग्रुप के बारे में, then you see here it's for providing proximate security to the prime minister. For this reason this was formed, special protection group. So you will given 4 options. Special protection group, first is combating terrorism, second is money laundering, third is like providing security to the prime minister, and fourth is like any none of the above or all the above or more than one. So you should be knowing exactly this security to the prime minister, है ना, बेसिक्स. नाउ दैट इसका मोटो देखिएगा, ब्रेवरी, डेडिकेशन, सिक्योरिटी इज द मोटो. देन वी हैव द एजेंसी अंडर द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट. दिस इज अ न्यू थिंग. दिस इज अ न्यू थिंग यू विल लर्न. एंड एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द. दिस इज करेक्ट. This is correct because in the SPG Act if you see here it is written there that every member. तो ये नई नई चीज आप सीखोगे, that is going to be very very important. Now if you see second article, the US team to visit India for the P-8 aircraft. Now this article is not known to you, so we gave you 2 very basic questions. First of all, the P-81 aircraft used in India is built by which country? The answer is US. Second, I asked you that P-18 is a maritime patrol aircraft. Yes, this is correct. It is a maritime aircraft. ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चंस आए थे इस बार एग्जामिनेशन में, तो सेम वे यू हैव टू लर्न. नाउ नेक्स्ट आर्टिकल सी आप देखो, प्रेसिडेंट अजी अनवील्स अ ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव. अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका एक वाइडर इम्पैक्ट है बिकॉज इस ऑन द लाइन ऑफ दिस आप देखो पहले भी इसने 4 इनिशिएटिव लॉन्च किए, है ना. ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव,
Global Security Initiative, Global Civilization Initiative, and last one is Global Governance Initiative. So it will be asked, you will given 4 groups: China, European Union, United States of America, and the World Economic Forum. So answer will be the China is the right answer. Then the next article was the Can Vulture help prevent the pandemics? है ना. अब इससे हम क्या प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बना सकते हैं? अगर आप देखोगे यहाँ पे, यू सी द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज all species of vulture found in India are currently endangered. Incorrect. We have 9 species where 4 are endangered, 3 are least concern, and 2 are I think one is vulnerable and one is critically. We have given you the explanation. आप देखोगे explanation यहाँ पे, you will get that here. You see the explanation here. So we have 1, 2, 3, 4 are the critically endangered. The 1 is endangered and the 3 are near threatened species, and 1 is least concern. है ना. And we have 9 species of vulture taken from the original document, right? ना अब original document से जब हम सवाल लेते हैं आपसे, and which vulture number is the highest in India, है ना. Now again you see here, it's a very important kind of question. Out of all 9, if you see here, आप देखो यहाँ पे long billed vulture है 26,500. So बाकी आप देखोगे पॉपुलेशन का पता ही नहीं है, 1000, इट्स 26,000. तो अब लॉन्ग बिल्ड वल्चर जो है ना, इसको आप नहीं भूलोगे कभी भी इंडिया के रिस्पेक्ट में. इट्स ए क्रिटिकली एंडेंजर्ड एंड द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ आपसे एक और सवाल पूछा गया था और दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीज द फर्स्ट एक्शन प्लान फॉर द वल्चर कंजर्वेशन इन 2006. नाउ आपसे प्रीलिम्स में पूछा जाएगा, राइट? The action plan for the vulture conservation was released in 22, 25, or so you should be knowing that this was the first, and then we have currently 20 से लेकर 25 तक. And for this implementation we have National Vulture Recovery Committee. सब कुछ आर्टिकल में है. And you see it is headed by not Union Minister, it is headed by Additional Director General of the Forest, है ना. तो एक यूनिक वे है लर्न करने का. आर्टिकल लिया हमने और आर्टिकल से वॉट एवर द प्रीलिम्स क्वेश्चंस वी कैन फ्रेम, वी आर फ्रेमिंग एंड प्रोवाइडिंग यू. नेक्स्ट आर्टिकल देखो, इट्स लाइक अगेन द बल्क ड्रग पार्क. ना ये कॉन्सेप्ट है बल्क ड्रग पार्क, ये एक स्कीम ही है. विच डिपार्टमेंट इज इंप्लीमेंटिंग दिस स्कीम? नाउ यू सी हियर द आंसर इज डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ फर्टिलाइजर, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स. आप देखो यहाँ पे. Okay, now we have the 3 states has been selected for the bulk drug parks. Which all are 3 states? तो गुजरात. आप नहीं पढ़ोगे, आप इसको कब आप देखो, ये आपके न्यूज़ में क्या आया, इट्स अपकमिंग हिमाचल में, ऊना डिस्ट्रिक्ट में. तो हमने ये पता किया कि एक्चुअली में हिमाचल में क्यों है. देन वी गॉट टू नो दैट वी हैव 3 एंड दैट हिमाचल प्रदेश इज 1. गुजरात, हिमाचल, आंध्र प्रदेश. द फुल बजट इज प्रोवाइडेड. नो, इट्स नॉट फुल बजट. वी हैव 90% for the hill states, and then we have 70% for the cost of the other states. So we have, it's not the full, it's incorrect statement. And then we have the production link incentive scheme for the bulk drug schemes, right? So it is a correct statement, है ना. अब देखो नेक्स्ट आर्टिकल हमने क्या पिक किया, केरला कैबिनेट क्लियर्स द ड्राफ्ट बिल टू अमेंड द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. अब इससे हमने क्या क्वेश्चन फ्रेम किया, देखो, एज पर द एक्ट विच बॉडी इज एम्पावर्ड टू ऑर्डर द हंटिंग ऑफ एनिमल इफ इट बिकम्स डेंजरस टू ह्यूमन बीइंग. कौन से 4 में से एक बॉडी है जो ये डिसीजन लेता है कि उस एनिमल को वी कैन हंट दैट एनिमल इफ दैट एनिमल इज डेंजरस टू ह्यूमन. सो दैट इज चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन. अब ऐसे ही तो एग्जाम में पूछते हैं, है ना. पर ये क्वेश्चन हम करेंगे कैसे, ऐसे क्वेश्चन. अब ऑर्गेनिक करंट अफेयर्स भी लर्न कर रहे हैं हम और इसके प्रीलिम्स क्वेश्चंस भी हम अटेंड कर रहे हैं. दैट्स व्हाट आई एम इंसिस्टिंग यू ऑल दैट स्टार्ट गो विथ गोल्ड टाइड एज सुन एज पॉसिबल. सिर्फ टेस्ट सीरीज नहीं है हमारे, ये तो टेस्ट सीरीज का पार्ट भी नहीं है. दिस इज डिफरेंट फ्रॉम टेस्ट सीरीज. सो व्हेन यू विल रजिस्टर, दिस टास्क विल बी डन ऑन द वीकली बेसिस, एंड देन वी हैव द टेस्ट सीरीज, देन वी हैव द प्रैक्टिस शीट्स, वी हैव वीकली करंट अफेयर्स, एवरीथिंग. एंड similarly we have other articles as well that talks about the brain eating amoeba and so on.
राइट. तो हमारे पास काफ़ी आर्टिकल्स थे, वी कवर्ड, एंड दिस इज इट्स अ वे वी कवर द अभ्यास सेशन एवरी सिंगल वीक. सो इफ़ यू आर अ बिट इंटरेस्टेड और आपके लिए प्रीलिम्स एक मुश्किल है, then please start as soon as possible. There is no point of looking back. Now the time has already come. In September, like it's going to be like end soon. आपको start कर देना है. The sooner you start, the more you are going to learn, and the prelims will become easy for you. Thank you so much.